Capacity development is an important process in educational governance. Let's see what is the scope of capacity development and what are different areas of capacity development. There could be national capacity development, there could be institutional capacity development, and there could be teachers' capacity development. So scope of capacity development could be different for different entities. The entity could be national, country level entity, the entity could be an institution, and the entity could be an individual. These days you might have heard about capacity development regarding EFA, Education for All Targets. So इसके हवाले से भी मुख्तलिफ मुल्कों की capacity develop की जा रही है. Pakistan is one of the signatories of EFA. So it also received lot of support from international organizations regarding its capacity development. So what is capacity development for EFA? It includes strengthening national capacities to design coherent policies and credible development plans within the framework of EFA. क्योंकि EFA एक इंटरनेशनल गोल है जिसको अचीव करने के लिए सर्टनली नेशनल कैपेसिटी है उसको डेवलप होना है. सो इस काम के लिए बहुत सारे ममालिक के अंदर नेशनल कैपेसिटीज़ को डेवलप किया गया एंड इट इंक्लूडेड capacity development regarding designing coherent policies and credible development plan within the framework of EFA. इसमें capacity development के areas क्या हैं? Education management information system, that is the most important aspect of capacity development at national level. When we say education for all, it means there should be a complete database regarding students' enrollment, their attendance, dropout ratio, teacher-student ratio, facilities available, number of schools, number of teachers, all these things. तो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आपके पास एक एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो. तो इस हवाले से EFA टीम ने बहुत सारे ममालिक में कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए और उन ममालिक की कैपेसिटी डेवलप की कि वो अपना EMIS डेवलप कर सकें. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज विच रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम EFA group, EFA team regarding EMIS development. Capacity development is needed in education sector assessment and policy review. कि education sector की assessment कैसे की जाए और फिर policy review कैसे किया जाए, इसमें भी आपकी capacity है उसको develop होना ज़रूरी है. और इसके साथ साथ कि education policy बनाई कैसे जाए. फिर एक और अहम चीज़ है दैट इज़ रिसोर्स प्रोजेक्शन टेक्निक्स, कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, फ्यूचर में जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे. तो उसके लिए रिसोर्स प्रोजेक्शन टेक्निक्स जो हैं उसकी भी कैपेसिटी डेवलप की जानी चाहिए. Financing education, educational monitoring, coordination with international bodies. So all these areas are important regarding capacity development. So capacity development is an important process of educational governance. Educational governance needs to ensure that the people who are involved in implementing policies and in making policies, they have the capacity to do those functions. And for this thing, to achieve these targets, to do these processes, educational governance needs to make arrangement for capacity development.